Hello friends, in part 2 of the polygon we are taking some important numerical problems. Now starting with the first, how many sides does a regular polygon have if the measure of exterior angle is 24 degree? So what you have to find? You have to find the number of sides of a regular polygon, and what is given? You are given what? Exterior angle is given 24 degree. So to find क्या करना है हमने? Number of sides. Now given is what? Exterior angle is 24 degree. तो हम मान के चलते हैं कि let the number of sides कितनी है? N sides हैं of the regular polygon. Now exterior angle is given how much? 24 degree. Now what is the formula for exterior angle of any regular polygon? So exterior angle of any regular polygon, this is given by (360 upon n). तो यही फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल का, राइट? तो फ्रॉम देयर यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स. तो इसको ट्रांसपोज कर दो आपस में. तो दिस इम्प्लाइज n इज व्हाट? 360 by 24, this comes out to be 15. So the number of sides of a regular polygon which is having exterior angle as 24 degree is 15. Clear? Now moving towards the second question. So what is the number of diagonals in a pentagon and a polygon of 8 sides? तो क्या find out करना है? We have to find the number of diagonals. तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो लिख लीजिए आप यहाँ पे. राइट. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगन? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगन, सो दिस इज गिवन बाय n into n minus 3 upon 2. तो इन पेंटागन, अब पेंटागन में n की वैल्यू कितनी है? n इज इक्वल टू व्हाट? 5. सो देयरफॉर फाइव इंटू 5 minus 3 upon 2. So this comes out to be 5. So therefore the number of diagonals in a pentagon कितना है? 5. तो और क्या पूछा है उसने कि what is the number of diagonals in a polygon of 8 sides? Now n is given what? 8. ठीक है. तो number of diagonals क्या होंगे in a 8-sided polygon? So this is 8 into 8 minus 3 divided by 2. So 8 into 5, 40, 40 divided by 2. So this comes out to be 20. So therefore the number of diagonals in a polygon of 8 sides is what? 20. So clear? Now moving further. Next question. Exterior angle of a regular polygon is 1/3 of its interior angle. How many sides does the polygon have? तो क्या निकालना है इसमें? We have to find the number of sides in a regular polygon. Given क्या है हमें कि exterior angle of a regular polygon is 1/3 of its interior angle. तो you have to find what? The number of sides, that is n. अब गिवन क्या है? Exterior angle of a regular polygon is 1/3 of its interior angle. So now you know what is the exterior angle and what is the interior angle of a regular polygon.
You put the values here, from there you can find the value of n. Now exterior angle is given as, so this is equal to 1/3 of, and interior angle is given as what? Right? अब इसको सॉल्व करते हैं, तो दिस implies what? 360 by n degree, so this is equal to 60 degree, माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3, दिस कम्स आउट टू बी 120 by n degree, राइट? अब ट्रांसपोज कर लीजिए वैल्यूज, सो दिस कम्स आउट टू बी 360 प्लस 120 by n equal to what? 60 degree. So this implies what? 480 by n equal to what? 60 degree. So from there you can find the value of n. So that comes out to be 8. तो number of sides हमारे पास कितनी आ गई? 8, right? Now moving further, the sum of all interior angles of a regular polygon is given as 1080 degree. So what is the measure of each of its interior angle? तो आपने क्या निकालना है? Interior angle of a regular polygon you have to find. Now given is what? Sum of all interior angles of a regular polygon. Now what is the sum of all interior angles of any polygon, चाहे वो regular हो या ना हो, right? तो what is the sum of all interior angles? तो sum of all interior angles of any polygon, so that is given by 2n minus 4 into 90 degree. तो यही फॉर्मूला हमने किया था, right? So this is equal to what? 1080 degree. तो from here you can easily find the value of n. और n यहाँ पे क्या है? These are the number of sides. So this implies what? 2n minus 4 equal to, so this comes out to be 12. This implies 2n equal to 12 plus 4, and तो number of sides ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन कितना आ गया? 8 साइड. तो हमें ये लग गया पता कि इस रेगुलर पॉलीगन की साइड्स कितनी है. तो अब निकालना क्या है? इंटीरियर एंगल. तो अगर साइड्स पता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन की, यू कैन ईजिली फाइंड द इंटीरियर एंगल. और नाउ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन, सो दिस इज गिवन बाय विच फॉर्मूला? तो 180 डिग्री माइनस 360 by n degree. तो यही फॉर्मूला होता है. सो फ्रॉम देयर यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स. कितना है? n कितना है? 8. तो पुट द वैल्यू से, सो कितना आ गया? 180 माइनस 45 डिग्री, दिस कम्स आउट टू बी 135 डिग्री. तो इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन ऑफ 8 साइड्स वो कितना है? 135 डिग्री. सो क्लियर? थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.